देवेंद्र, वैभव, भावेश, योगीराज, तेजस। अभी हम सब रेडी है और अभी हम निकलेंगे। गाइस अभी हम पनवेल पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमारे दूसरे मेंबर्स का वेट कर रहे हैं जो कि आने के अभी पीछे से आएंगे। और हम काफ़ी तेज़ आ चुके हैं पनवेल में और अभी यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर ही अपना करनाला गढ़ है फोर्ट है, वहाँ पे हम जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। गाइस अभी सब आ गए, स्टार्ट करेंगे। गजारी गजारी विठला विठला गजारी गजारी मधुमाले भंडारी आवागे मधुमाले भंडारी आवागे। सो गाइस अभी हमने एंटर कर लिया करनाला फोर्ट में, हमारी ट्रेकिंग शुरू हो गई है। ये मेरे साथ भावेश है और यहाँ पे करनाला बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए अपना नेशनल बर्ड मोर। ये खरगोश
memories, they keep on following the devil, he's a rambling man. I've been living in a hole in the mountain, ain't no sense in there. Oh, these memories, they keep on following the devil, he's a rambling man. See what we can try. चांगला प्लेस आहे. कर्नाल फोर्ट सगळे मित्र मैत्रिणी तुम्ही येऊ शकता. आप फ्रेंड्स लोग आ सकते हो. और जरा तुम आगे रखो.
और अभी हम चलते जाएंगे टूरिस्ट। ये बॉटल उठा के छोड़ दिया मुझे। करनाला फोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं और जैसे कि मुझे पता है या फिर मैंने पढ़ा है, ये जो फोर्ट है ये सन 1200 में बिल्ड हुआ था और पोर्तुगीज़ ने ये किला बांधा था सन 1200 में। उसके बाद काफ़ी राजाओं ने यहाँ पे राज किया और फिर अपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बारी आई। उन्होंने ये किला 1600 में जीता, जंग लड़ी थी और इसी के साथ ये किला उनका हुआ था। ये किले की खास बात है कि ये शत्रुओं के लिए काफ़ी डिफिकल्ट था और ये किले में काफ़ी राजाओं ने राज किया है और जैसे कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी इसकी हाइट थी। अभी तो इतने सालों की वजह से कुछ बिगाड़ हुआ है। ट्रेकिंग करना अच्छी बात है। सो गाइज, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने न्यू चैनल बनाया है, चेतन ऑन मिशन करके उसका नाम रखा है और मेरा जो गोल है वो है कि मेरे आसपास जो भी किले हैं, फोर्ट्स है, ट्रेकिंग पॉइंट्स है, माउंटेन्स है, वो मैं क्लाइंब करूँगा, चढ़ूँगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जैसे जिसके साथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मैं 1 मंथ में कम से कम 3 ट्रैक करने का ट्राई करूँगा। उसका वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको ये ब्लॉग्स पसंद आए हो, पहले के 2 ब्लॉग हो रही है, जो भी आएगा वो ब्लॉग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी कुछ एडवाइस हो इसके बारे में कि कुछ कमी हो तो वो भी मुझे कमेंट कीजिए। और आप लोग भी मेरे साथ ट्रैकिंग में ज्वाइन हो सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कीजिए मेरे आईडी पे और एंजॉय कीजिए ब्लॉगिंग मेरे साथ और ट्रैकिंग एंजॉय कीजिए मेरे साथ। अभी जो मेन ट्रेकिंग पॉइंट है जहाँ से प्रॉपर फोर्ट स्टार्ट होता है वो भी आएगा और काफ़ी अच्छा लगता है सैटरडे, जो कि आज सैटरडे है और हम यंगस्टर्स जो निकले हैं ट्रेकिंग के लिए, काफ़ी एनर्जेटिक दिन रहता है फिर दिन भर। कुल मिला के 8 जन हमारा ग्रुप। तो देखिए हम कैसे पहुँचे हैं। 1500 फीट ऊंचा है ये और स्टार्ट किया था हमने कुछ 1.5 घंटा पहले, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाऊंगा। ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। ये जो मेन फोर्ट है बहुत ही खूबसूरत फोर्ट है और अभी यहाँ हम कुछ पलों के लिए रेस्ट लेंगे और उसके बाद ये जो फुल ट्रैक है हम एक सेट में कंप्लीट कर लेंगे। ऊपर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, मज़ा लेंगे, फोटोशूट होगा और आपको मैं दिखाऊंगा ट्रैक कैसा है, फोर्ट कैसा है, क्या कंडीशन है।
राह पर राम निजराज है, निजराज है, निजराज है। हृदयात माऊली रेते ससावली गडकोट रावणी शिवशंकर हा मुक्तीची मंत्रणा युक्तीची यंत्रणा कळदुष्ट दुर्जना प्रलयंकर हा सृष्टांचा रक्षितो शत्रूनी खंदतो भावंड भावना संस्थापितो ऐसा युगे युगे स्मरणीय सर्वदा माता पिता सखा शिवभूपतो दंड पर चीता मृगचंड पर भूषण में तुंड पर जैसे मृगराज है तेजतम अंश पर कन्या जिमी कंस पर दोमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। सो फायनली आम्ही पोहोचले गडावर कर्नाळा फोर्ट आणि वन डे ट्रेकसाठी खूप चांगला गड आहे. जर ट्रेकर असेल तर तो 1-1.5 तासात कंप्लीट करू शकतो हा गड.